Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Science Class 7th. And here this is your book, Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, today we are going to start with a new chapter and this is chapter number 9 of your book. And the name of the chapter is Motion and Time. So children, in this chapter, we are going to learn about motion, slow or fast, time, speed and average speed, time graph, uniform and non-uniform motions. Motion means movement. किसी भी चीज, कोई भी चीज जब वो मूव करती है उसे ही मोशन कहते हैं. We see different bodies moving around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो time to time move करती हैं. They exhibit different kinds of motions. In class 6, you studied about different types of motions. So class 6 में आपने different types of motions पढ़े थे. Here, let's learn some more new things. The first topic here is motion, slow or fast. Objects around us may travel fast or slow. हमारे आसपास जो भी objects हैं वो fast हो सकते हैं या फिर slow हो सकते हैं. Example, a bicycle is slow but a car is fast. एक bicycle कैसी होती है? Slow चलती है, धीरे चलती है और ऐसे ही एक कार जो है fast means तेज चलती है. Any object that takes a long time to cover a certain distance is said to be slow. So, कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा टाइम लगाती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, तो ऐसी चीज को हम स्लो कहते हैं. The objects that cover the same distance in a shorter time are called to be fast. और कोई ऐसी चीज जो उसी डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेती है वो फास्ट कहलाती है. The terms fast and slow actually indicate the speed of an object. ये दोनों जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताते हैं. Speed and average speed. अब ये दोनों क्या होते हैं? The speed of an object is defined as the distance traveled by it per unit time. So किसी भी चीज का जो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग ही स्पीड कहलाती है. कोई भी चीज, किसी भी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम में. We must see many, we see many moving objects around us. To compare their motion, we find the distance covered by them in the given time. So हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और उनके कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, हम जो है इस फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं. So here the formula is speed is equal to distance upon time. Distance traveled upon time taken. So this is the formula of speed. अगर speed को calculate करना है तो हमें total जो भी distance है उससे time को हमें divide कर देना है, जितना भी time लगा है travel करने. Speed is denoted by the symbol S and distance by D and time by T. So इस formula को हम short में ऐसे भी लिख सकते हैं. Then its speed is given as speed is equal to distance upon time. It may be noted that it is difficult to maintain the speed of a vehicle like a car or a bus same all the time. So ये बहुत ज़्यादा difficult है एक ही speed को maintain रखना. किसी भी vehicles हम जा रहे हैं तो एक ही speed में जाना बहुत ही मुश्किल है. जैसे कि कार कह सकते हैं, हम बस कह सकते हैं. And it is so because at many places brakes are to be applied to slow down the vehicle. कई जगहों पे हमें ब्रेक भी लगाना होता है ताकि हम व्हीकल को स्लो कर सकें. Example, traffic signal, traffic jam, etc. So ये सारी चीजें जब आती हैं तो हमें स्पीड को स्लो करना पड़ता है. So the speed of a body is usually not uniform. किसी भी चीज की जो स्पीड है वो पर्टिकुलर या फिर यूनिफॉर्म नहीं होती है. So the speed here is the fact. In fact, the average speed. So यहाँ पे जो speed है वो एक average speed होती है. Thus, the average speed of a body may be defined as total distance traveled divided by the total time taken to cover that distance.
सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें जो भी हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम जो हमने लिया, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी. Now what is unit of speed? The standard unit of speed is meter. स्पीड को हम मीटर में मेजर करते हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने मीटर चले. That is meter per second because distance is measured in meter and time in seconds. The small value of speed are expressed in centimeter plus second. Centimeter and high values in kilometer per hour. So जो छोटे सबसे छोटा एक्सप्रेशन है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड और जो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है वो है किलोमीटर पर आवर. Now how can we measure speed? Measuring speed the speed is measured with the help of an instrument called speedometer. स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पीड को कैलकुलेट करता है. You may have seen speedometer in cars, scooters, etc. So this is the picture of speedometer जिसे आपने कार या फिर स्कूटर या बाइक्स में देखा हो. It indicates the speed of a vehicle in kilometer per hour. So ये जो है व्हीकल की स्पीड को बताता है किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग. It is fitted in the dashboard of the vehicle and there is another instrument along with it. It is called ओडोमीटर. और इसके साथ एक दूसरा होता है मीटर जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं. इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर. ये डिस्टेंस बताता है कि व्हीकल ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया. वी कैन नो द स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल एट द सेम टाइम बाय चेकिंग द रीडिंग. दोनों ही चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पीड और डिस्टेंस हमें दोनों ही यहाँ पे पता चल जाएगा अगर हम इस जो है ओडोमीटर और स्पीडोमीटर को चेक करते हैं. Calculating speed, a school bus traveled 100 meters in 50 seconds. So एक स्कूल बस है, इसे 100 मीटर ट्रेवल करना था, उसने 50 सेकेंड्स लगाए. Calculate its speed. अब स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? We know that speed is equal to distance upon time. So given distance is 100 meter and the time is 50 seconds. So speed is equal to distance upon time. तो 100 upon 50 करेंगे. So the answer is 2 meter per second. Now the second question is a train takes 3 hours to reach Delhi from Agra. एक ट्रेन को दिल्ली से आगरा जाने में 3 hours लगते हैं. And if the distance between Delhi to Agra is 200 kilometer, अगर दिल्ली से आगरा तक का distance 200 किलोमीटर है, then find the speed of the train. अब यहाँ पे देखेंगे टाइम आर में दिया हुआ है और जो हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया है. So the formula is speed. Half speed is distance upon time and here the distance is 200 kilometer, time is 3 hours. अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आया 66.67 kilometer per hour. So this is the speed of the train. Now uniform and non-uniform motion. A moving body is said to be of uniform motion if it travels equal distance. So एक मूविंग बॉडी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जा सकता है इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर उसने इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रैवल किया तो उसे कहा जाता है कि वो गाड़ी एक यूनिफॉर्म मोशन में चले, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है. दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी. इसका मतलब कि जो स्पीड है उस बॉडी का वो कांस्टेंट है पूरी जर्नी में. फॉर एग्जाम्पल द गिवन फिगर शोज द पोजीशन ऑफ द मूविंग कार एट डिफरेंट टाइम. सो कार का पोजीशन शो कर रहा है एंड यू कैन सी द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर पर आवर. आप ये देख सकते हो कि कार ने 1 घंटे में 30 किलोमीटर उसने क्रॉस किया है. हेंस द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कार है वो कॉन्स्टेंटली मीन्स यूनिफॉर्मली चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. Thus it is it has a uniform motion. So 9 AM पे कार स्टार्ट हुई थी, 10 AM पे उसने 30 किलोमीटर कंप्लीट किया. अब 10 से 11 के बीच में उसने 30 किलोमीटर कंप्लीट किया. अब 11 से 12 उसने 30 किलोमीटर कंप्लीट किया. इसका मतलब वो एक ही स्पीड से कार चल रही है. It must be remembered that the body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. So इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए
कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में हम तब कहते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम और डिस्टेंस दोनों ही एक पर्टिकुलर लेवल पे हो, वो चेंज ना हो। द टाइम इंटरवल मे बी बिग और स्मॉल, जो टाइम है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट एक यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है। नाउ अ मूविंग बॉडी इज सेड टू बी ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कोई भी एक चलती हुई चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कब कहलाएगी? इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में उसने कभी ज्यादा किलोमीटर कवर कर लिया और कभी उसने कम किलोमीटर कवर किए, सो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल द फिगर गिवन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ द कार एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कार का कितना उसने कवर किया है। द कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। सो ये 1 घंटा जो था, 1 घंटा हो गया 9 से 10, इसमें इसने 5 किलोमीटर कवर किया। एंड 20 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर। अब 10 से 11 जो 1 घंटा था, इसने 20 किलोमीटर कवर कर लिए। अब जब 11 से 12 का जो 1 आवर था, इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर को कवर किया है। सो ये कार 1 घंटे में पहले 5 किलोमीटर चली, फिर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, फिर 1 घंटे में इसने 2 किलोमीटर बस कवर किया। सो thus the car does not travel equal distance in equal interval of time. So इसमें हम क्या देख सकते हैं कि कार ने इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं किया, कभी 5 तो कभी 20 फिर कभी 2, तो इसने इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं किया, लेकिन टाइम सबका एक ही था। Hence the motion of the car is said to be non-uniform. इसलिए कार के मूवमेंट को हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मोशन जो है किसी भी फ्रीली फॉलिंग मीन्स आराम से गिरती हुई बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिफाइंड एज द पीरियड, स्पेस और गैप बिटवीन द टू इवेंट्स। सो टाइम जो है पीरियड होता है, इसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, स्पेस कहते हैं या गैप कहते हैं, दो इवेंट के बीच में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड। सेकेंड जो है टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है। द अदर यूनिट्स ऑफ टाइम इंक्लूड मिनट, आवर, डे, मंथ एंड ईयर। जो दूसरे यूनिट्स हैं वो हैं मिनट, आवर, डे, मंथ एंड ईयर। सो दीज ऑल्सो डिपिक्ट टाइम। नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। अब जो है यूनिट्स ऑफ टाइम को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? सम यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स आर एज फॉलोज। 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 24 आवर्स मीन्स 1 डे and 30 days means 1 month. So this we already know. 12 months is equal to 1 year, 10 years is equal to 1 decade. 10 decades, which means 100 years, is equal to 1 century, and 10 centuries means 100,000 years is equal to 1 millennium. So like this we calculate the time. Now measuring time then and now. So पहले लोग कैसे टाइम को मेजर किया करते थे और हम कैसे मेजर करते हैं? Let's learn. In the ancient time, people did not have clocks and watches. So जब पुराने समय की हम बात करते हैं, उस समय जो है लोगों के पास वॉच और क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे. They used different devices such as the sundial. वो sundial को यूज किया करते थे. Sand clock, water clock and the pendulum clock for measuring time. So इन सारे डिवाइसेस को यूज किया करते थे और इससे ही उन्हें टाइम का पता चल पाता था. Historical sundials were designed and built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur. So महाराजा जय सिंह जो थे, उन्होंने एक sundial बनवाया था. They are found in Gujarat, Delhi, Ujjain and Varanasi. These sundials are a part of Jantar Mantar located at the 4 places. So चारों जगहों पे जो जंतर मंतर है वहाँ पे ये sundial बना हुआ है. They give fairly correct time, but they are useless after sunset. So ये टाइम तो सही बताते हैं, लेकिन सनसेट के बाद ये टाइम नहीं बता पाते हैं. Here you can see the sundial at Jantar Mantar in Jaipur.
Nowadays, we use modern or advanced clocks and watches such as wall clocks, digital watches or quartz, stopwatch and stop clock. So आज के टाइम में हम इस तरीके के वॉच यूज करते हैं to see the time. The stopwatch and stop clock are used in the laboratories for measuring time intervals. So ये जो stopwatch है और जो stop clock है इन्हें जो है लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए. The stopwatch can be started and stopped any moment by pressing a button. So ये जो stopwatch है इसे कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, कभी भी स्टॉप किया जा सकता है, बस एक बटन को प्रेस करना होता है. It can measure time up to 1/10 of a second. So सेकेंड का 1/10 भी ये मेजर कर सकता है. Now, the working principle behind all these clocks or watches is the periodic motion. So, इन सारे जो watches यहाँ पे work करते हैं या जो clock work कर रहे हैं इन पे जो इनका जो principle है वो है periodic motion. Let's understand it with the help of a simple pendulum. So, एक simple pendulum से let's see what's written here. Now, the first topic that we are going to learn here is simple pendulum. So, children here. A simple pendulum consists of a small metallic solid, sphere or ball called a bob. So ये जो simple pendulum है इसमें एक छोटा सा बॉल होता है जिसे बॉब कहा जाता है and it is suspended by a fine thread, preferably of silk from a rigid support. So इसमें एक लंबी सी थ्रेड होती है वो ज़्यादातर सिल्क की होती है और एक बहुत ही रिजिड एक सपोर्ट रहता है जिसपे ये जो है थ्रेड ऐसे टांग दिया जाता है. The arrangement is such that the bob is free to swing back and forth. इसको ऐसे अरेंज किया जाता है कि जो बॉब है वो बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे फ्रीली जा सके. Here you can see the picture. This is a metal bob and here you can see it was in this position. जैसे हमने इधर पुल किया तो the pendulum is taking the same position, same degree it has taken and it has moved back. So here you can see 0 is the mean position and जब हमने इसे आगे खींचा it is the extreme position और ये पेंडुलम जितना हमने आगे खींचा उतना ही वो पीछे जाएगी तो ये है extreme position also extreme position B and this is extreme position A. So here this is a simple pendulum and the motion of in a simple pendulum. The normal or the resting point the position of the bob is called the mean position. So normal position which is mean position का रहता है in the figure. 0 is the O is the mean position of the bob. When the bob is displaced from its mean position and taken one side and released. जब बॉब को हम पकड़ते हैं और एक साइड अपनी तरफ जो है ले जाते हैं एक उसकी पोजीशन चेंज करते हैं. The bob makes a to and fro motion. बॉब जो है to and fro एक मोशन क्रिएट करता है about its mean position अपने mean position के बीच में. The to and fro motion of the bob about its mean position is called auxiliary movement. इस movement को हम auxiliary movement कहते हैं. In the figure the bob is displaced from the mean position O to one side. एक तरफ जो है बॉब को हम लेके गए हैं and that is point A and released. A तक ले जाके हमने उसे छोड़ दिया. It falls back to its mean position O, but does not stop there. अपनी O तक mean position तक तो जाता है पर वहाँ पे रुकता नहीं है. It continues to move forward to point B. वो point B तक जाता है. The distance of point B from O is equal to the distance of point A. So जितना O और A के बीच में distance है उतना ही O और B के भी distance है वहाँ तक हो जाता है. From point O, the bob does not go beyond point B. और जो bob है वो point के B के आगे वो नहीं जाता है. And from there again falls back towards the mean position. और वहाँ से वापस आता है अपनी mean position पे. And the motion of the bob from one extreme point to another extreme position and back is called oscillation. और इस आगे पीछे होना उस bob के को ही हम oscillation कहते हैं. इस तरह से oscillatory movement कहते हैं. In the figure, the motion of the bob starting from point O to A and then from A to B via O and then finally back
to O from V is called oscillation. So इस पूरे movement को हम oscillation कहते हैं. The positions where the bob is at its maximum distance from the mean position is called the extreme position. So वो जो position जो bob ने maximum distance उसने carry किया उससे हम कहते हैं extreme position. In the figure, point A and point B are the extreme position. So जो figure हमने देखा था उसमें जो point A और B था वो दोनों थे extreme positions. Now the distance time graph. A graph represents to a diagrammatic representation which highlights the interrelation between the two quantities. So graph क्या है? ये एक diagrammatic representation है और ये highlight करता है जो interrelation होता है दो quantities के बीच में. The distance time graph is a line graph that shows how the distance traveled by the moving object changes with time. So ये जो distance time graph होता है ये बताता है कि कितना distance travel किया है एक moving object में एक दिए गए time में. Now look at the graph. There are two perpendicular lines meeting at the point O, which is called the point of origin. So अभी हम एक graph देखेंगे जिसमें दो perpendicular lines बने हुए हैं और जहां पे वो जाके O पॉइंट में मिल रहे हैं उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है. The two perpendicular lines are the axis और जो दो perpendicular lines है वो हम axis कहते हैं. We have the x axis that is the horizontal axis and as well as y axis that is the vertical axis. So x axis O, this is the point of origin. अब यहाँ पे जो horizontal line है उसे x axis कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे y एक्सिस कहते हैं. The two quantities are represented one on each other और ये दो quantities हैं वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं एक्सिस पे. An appropriate scale is chosen to represent the distance and another to represent the time on the graph. So एक स्केल को यूज किया जाता है जिससे इन दोनों को मेजर किया जाता है. ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं. For example, time is 1 second. Which is equal to 1 centimeter and distance is 1 meter which is equal to 1 centimeter. So अगर हमने जो अपने बार ग्राफ है उस पे अगर हमने एक ब्लॉक लिया, एक ब्लॉक जो 1 सेंटीमीटर का होता है, so 1 ब्लॉक अगर हमने लिया x एक्सिस पे तो इसका मतलब अगर हमने 1 ब्लॉक लिया x एक्सिस पे तो इसका मतलब ये 1 सेकेंड दिखा रहा है और अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिया y एक्सिस पे इसका मतलब 1 मीटर दिखा रहा है. So y axis is showing distance and the x axis is showing us the time. The distance time graph for uniform motion is a straight line. So जो distance time graph होता है किसी भी uniform motion के लिए, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि uniform motion में जो है डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मीन्स एक ही स्पीड पे हम कवर करते हैं. तो इसलिए जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन से ही डिनोट होता है. इट इंडिकेट्स दैट द मूविंग बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. इसका मतलब है कि जो मूविंग बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल चल रहे हैं irrespective of how long or how short the time intervals may be. The slope of the graph indicates the speed of the object. और अगर इस लाइन में या तो अप या फिर डाउन होता है इसका मतलब जो स्पीड है वो या तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है. If the distance time graph has a low slope, अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब it indicates that the object is moving at a low speed. इसका मतलब स्पीड जो है क्या है लो. बट ऑन द अदर हैंड इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज अ हायर स्लोप, अगर ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ हाई स्पीड. इसका मतलब स्पीड कैसी है हाई है. सो चिल्ड्रन हियर यू कैन सी देयर आर टू ग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी दीज आर ऑफ 1 सेंटीमीटर. ये जो है 1 सेंटीमीटर के होते हैं. अब आप देख सकते हो कि ये जो है टाइम एकदम यूनिफॉर्म है मींस एक सिंगल लाइन जा रही है तो यहाँ पे स्पीड जो है यूनिफॉर्म है. बट
अब हमने जब देखा कि जो है नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब स्पीड स्लो है, और जब ये लाइन ऊपर जा रहा है इसका मतलब स्पीड हाई है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द कर्व लाइन। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वो एक कर्व लाइन होता है, एंड दैट इंडिकेट्स दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि लाइंस जो हैं वो कर्व है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्पीड को चेंज कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व लाइन बना हुआ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी एट रेस्ट is a straight line parallel to x axis. So अब यहाँ पे हमें देख सकता है कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है x axis के पैरेलल जा रही है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रहा है, ये एक जगह पे स्टॉप है, रुका हुआ है। Now children, let's recall what we have learned in this chapter. Motion implies movement of bodies, objects around us may travel fast or slow. The terms fast and slow indicate the speed of an object, which is defined as a distance moved in unit time. It is difficult to maintain the speed of a vehicle at a constant value. Therefore, generally, the average speed is taken. The common units of speed are kilometer per hour and meter per second. A speedometer helps to measure the speed of a vehicle, while an odometer indicates the distance traveled by the vehicle. The moving body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. If a moving body travels unequal distances in equal interval of time, it is said to be of non-uniform motion. Time is defined as the period, space of gap between the two events. The standard unit of time is second. Time was measured in very different way in ancient time. Now we have a variety of clocks to measure time. A simple pendulum consists of a small metal box suspended using a fine thread from the rigid surface. We can calculate the time period of a pendulum by dividing the time taken and number of oscillations taken. The distance between graph is a graphical representation of a distance traveled by a body and the time taken. The distance time graph for uniform movement or the motion is the straight line, and for non-uniform motion is the curved line. So now children, let's answer the questions given here. What is the unit in which small values of speed are expressed? So जो small value है speed की उसको measure करने के लिए क्या unit चाहिए होता है? So it is centimeter per second. What would be the speed of a car traveling 100 meter in 50 seconds? So as you know that the formula of speed is distance upon time. So यहाँ पे अब आपको distance दिया गया 100 meter और time है 50 seconds. So when you calculate it, so the answer is 2. So 2 meter per second is the answer. How many years are there in 1 century? 1 century में कितने साल हैं? So it is 100 years. Who designed and built the historical sundial? So find it and write it here. The bob is free to move back and forth. It is correct or incorrect? So क्या ये correct है? Yes, this is correct. Why is it difficult to maintain constant motion of a vehicle? And why is a stop clock used in laboratories? What kind of motions is exhibited by a pendulum? And how does a distance time, what does a distance time graph show? So distance time graph क्या बता रहा है? And what is the relation between the following: speed, time, and distance? So children, you have to answer these questions on your own. I hope that you have understood the chapter very well, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay latest.